So, hi Sayali, thank you so much for being with us and welcome to our J Talk. Thank you, sir. And to be honest, I'm really very excited to talk to you now after a long time. Same here, sir. Okay, and obviously, in the middle of your classes, assignments, so you have taken time just for this particular session, and I'm really thankful to you. It's So, my pleasure. quickly we will move to our problems. काफी बच्चों ने बहुत सारी queries पूछी हैं Hmm. कि सर जब भी आप इन टॉपर से मिले तो these are our like questions and they want to ask. So their first question is, while preparing for IIT JEE, how did you start your JEE preparation? Overall, what was your preparation strategy and your daily routine? Okay, so it's important to form a timetable first and stick to it because that will reduce your stress mainly. And after completion of a topic in class, you should read your notes first and then solve questions from whatever your coaching material and reference books, etc. And so I used to allot roughly equal time to PCM per day, around 1.5 to 2 hours. And जब school होती थी, it used to be tough because I had to manage both school and same day. So I used to cover up in the weekends. So इतना तो ओके सो that's all. मतलब ओवरऑल ये है कि तुमने कैसे किया और तुम्हें बाकी बच्चों को क्या बोलना चाहिए कि दिस इज व्हाट योर स्ट्रेटेजी शुड बी. So I think you should start solving questions first to know exactly what your weak area is, and then gradually increase the frequency of solving those questions particularly because the rest are easy for you. And Okay. stick to your schedule. It's very important. Yeah, that's very important that I think like disciplined study is very important. Yeah. So if you plan something, that means try to strict for that particular schedule. Yeah. Okay, good, very good. Sayali, the second question that we have is, तुम भी कई बार पूछते थे, आज भी और बच्चे पूछते हैं कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए. इट्स लाइक सर सेल्फ स्टडी का मीनिंग क्या है, राइट? सो तुम इसके बारे में क्या बोलना चाहोगी? बेसिकली पहले तो नोट्स पढ़ो लेक्चर्स के and go through them carefully. Focus on understanding. Don't ever try to mug up things, except for in chemistry, organic chemistry. Okay. But try to derive things yourself, and in physics, especially, understand what they actually mean physically. So, and don't be scared of solving tough questions. They seem daunting at first, but devote enough time for them. And I suggest don't give a lot of time at a stretch. You should think about it, and then after half an hour or so, move on to different questions, and then think about it again after some time. It's better. It's less stressful, and you'll probably solve it at the end of the day. Exactly. So I feel Sayali, like even when you were preparing, so ये क्वेश्चन तुम्हारी साइड से भी आता था कि सर डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं when we are doing self study, सर उसको कैसे अवॉइड करें? So अभी तुम्हें क्या लगता है कि if someone is studying like doing self study apart from their regular classes, so ये जो distractions हैं, चाहे वो social media हो, mobiles हो, so what do you suggest? क्या करना चाहिए if seriously you are targeting these competitive exams? I think you should stay away from social media. I hadn't created any Facebook or Insta account during my preparation, and I think you can do that after your JE and everything. And that WhatsApp is necessary because all the teachers are on WhatsApp, so that's fine. But I think sit in a room and keep your phone in a different room. That works. And try to study in a calm surrounding. Okay, that's exactly I feel the same. And even मुझे लगता है I think यार मोबाइल स्विच ऑफ कर दो तो I think that sounds better. Okay, तो distractions होंगे ही नहीं. Yes. Right. Okay, perfect. Quickly move to the next problem. Sayali, ये क्वेश्चन तुमसे भी कई बार आया
when you are solving assignments, DPPs or maybe quizzes, कि sometimes क्या होता है कि सर बहुत complex problems आते हैं, okay, and we feel कि सर मैंने आज इतना टाइम दिया उन complex problems को solve करते हुए, तो is it right or wrong कि एक problem पर when we are solving कितना time devote करना चाहिए? So what do you suggest in that case? Okay, so first of all, जो तुम्हारा daily goal है, you should stick to it first, complete that first, and then take out, rather fix some time for those problems in the end or whenever you feel like it, and then in that particular time, try to attempt those questions. And do focus on exactly what is asked in the question at the end, because sometimes it happens that you have to like get the answer in that form, that particular form. For example, integration may sometimes it's like integration of a plus integration of b function, and then you have the answer comes in that form exactly. And don't try to solve every particular thing in that question. Sometimes what is asked is more important, and focus on the details that are given in the question. Every piece of information is important. Even the smallest details are important. A is greater than b. This is an increasing function. This could be used in very important ways. Right. So मतलब ये है कि कितना फाइट मारना चाहिए, that is more important. Like कि सर वो क्वेश्चन में 2 minutes दे, 10 minutes दे, 15 minutes दे, 30 minutes दे, whatever. Like so what do you feel कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगर आपको लगता है कि मैंने इतना टाइम दिया है तो इतना टाइम देना चाहिए था कि नहीं, so कितने टाइम बाद आपको स्विच कर देना चाहिए if you are not able to solve that problem? I think half an hour तो मैक्स है, उसके बाद बस यही सोचते रहोगे कि हुआ नहीं और मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो okay. So half an hour to max है, but I think maths में you shouldn't take half an hour, क्योंकि पहले ही strike करना है तो हो ही जाता है strike, 15 minutes तक तो हो ही जाएगा I think. उसके बाद move on to different questions and attempt that later. Okay, right. Good one, Sayali. So my next question, very important, not only for students like who are in 11th or 12th, especially the kids, maybe they are in 8th standard or 9th standard or 10th standard. So the next question जो बच्चों से आया है, which is what is the right time to start JEE preparation? And to be honest, even on social media platform, I got one question that, sir, my child is in 3rd standard. So is this the right time to start JEE preparation? So now it's on you. What do you suggest the right time for JEE preparation? I think 9th, but for JEE preparation, I think 10th is actually when you start studying for JEE. In 9th, it's basically for NTSC or KVP or other Olympiads and stuff. But the point is that you should have the habit of sitting at one place for a long time and studying something. That is very important. Discipline is very important. I think the most important in this preparation. So you develop that habit, and then it becomes easier for you when the syllabus is more, the course, the load is more, or it becomes more difficult. So that habit is important. Okay. So I think 9th is the right time. Okay. So you want to say if you want to go for these competitive exams, so that means 9th is okay, but I think 10th is the right time if you want to get something extra. Right? So as you said, like if you want to prepare for competitive exams at this stage, when suppose you are in 8th standard or 9th standard, so you were talking about Olympiads, you were talking about KVPY and all. So तुमने Olympiads के लिए prepare किया था या directly आपने 9th standard onwards या 10th standard onwards foundation के लिए focus किया, foundation to IIT JEE? मैंने तो 9th और 10th में NTSC पे focus किया था. That was my main aim. But 10th के end में they started JEE preparation. They started teaching those topics, and NTSC के लिए mainly था. So I want to say
मतलब अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपको प्रिपेयर करना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यू आर इन 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड, so you want to say focus on like NTSC और Olympiads because I think वो एक बेस बिल्डअप करते हैं बच्चों का. I think वो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आते हैं कि yes, when you get into like maybe 10th and or 11th standard, so आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर हो जाता है, आपके जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो बिल्डअप हो जाता है. Okay, good. I think this is the right approach. So let's move to our next question. सयाली, बहुत कॉमन क्वेश्चन है राय. आई थिंक पीछे भी हमारा अभी हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन में, सो तुमने उस पर रिप्लाई दिया, बट द क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स आर आस्किंग इज हाउ डिड यू गेट अवे और हाउ डिड यू मैनेज टू गेट अवे फ्रॉम सोशल मीडिया? The only thing I suggest is don't create any accounts. Just don't get under peer pressure. And fortunately, my peer group was studious, so they didn't create any accounts either. And WhatsApp पे भी कोई इतना ज़्यादा active नहीं था, so that wasn't a problem for me. And I suggest JEE के बाद कर लो, बहुत time है. Perfect. So you want to say that कि यार सोशल मीडिया पे भी फ्रेंड्स ही बनाने हैं, so better है कि अगर आपका एक अच्छा peer group है, so I think it will help you, it will also like motivate you to move forward. Yes, and to study. Exactly, right, very good. Sayali, next question that we have from students point of view, so what are the books other than your coaching institute material that should be referred? So the purpose is for obtaining the right guidance. I'm talking about the right guidance on the right set of material from the abundance. What do you suggest? Okay, for physics, I think if you want to start from the basic, start with HC Verma, and especially objective 2 is really good for clearing your concept and basics. And DC Pandey, if you want to focus on solving problems time bound. And for chemistry, I used MS Chauhan for organic chemistry and N Awasthi for physical. Inorganic तो मैं class notes ही देखती थी mainly. And for maths, I completely relied on Mohit sir's material. It was enough. And it's like solving all the good questions from all the good reference books. It's very concise, and I think that's better. Okay, fair enough. So I think बच्चों आप लोगों ने सुन लिया है कि कौन कौन सी आपको किस सब्जेक्ट में बुक्स फॉलो करनी है apart from your coaching institutes. Obviously whatever institute, like whichever institute you are going, so that content is important, but at the same time, if you want to get a good rank, so you need something extra. Okay, so you can follow these books. And for right? Physics, there is one more, Aerodog, but I suggest you solve problems from mechanics and electrostats, etc. Not all topics. Mechanics is better in Aerodog, in my opinion. Okay. Yeah, thanks Ayali. So let's move to our next question, and the next question that we have is, what was your approach to attempt a paper and how did you adjust it with difficulty of paper? मतलब आप एग्जाम में जब हो, सो आप कोई एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे एंड और यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट जो नॉर्मली बच्चे बोलते हैं, ओके, एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना है ऑल, और मे बी आप डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अपना अप्रोच चेंज करते थे. सो व्हाट डू यू से? So for mains or advanced, for both? Yeah, obviously I'm talking about because बच्चों की query for mains as well as advanced, and not only for JEE, even they can talk about BITSET also or other competitive exams. So for mains, मेरी तो strategy maths, then physics, then chemistry थी, because I wanted to finish the lengthy portion first. उससे मेरा stress level थोड़ा कम होता था कि अब आराम से हो जाएगा. And so उसमें first try to solve all the easy questions. एक बार पेपर देख लो. Online में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि you can't see all the questions at once, but it doesn't take much time. And even if you don't do that, if you don't agree with that, at least don't spend much time on one question. That is the worst thing you can do.
You don't spend more than 4 minutes. मतलब मेंस में लेंदी 4 minutes हो सकता है, उससे ज़्यादा spend नहीं करना चाहिए. And for maths I allotted 1 hour 10 minutes I think maximum for mains, and then I used to do chemistry in 40 minutes I think, and then remaining time for physics. Or advanced में it was different. It was chemistry first, then physics, then maths. So chemistry के लिए 30 minutes, physics के लिए 1 hour, and maths के लिए 1 hour 30 minutes. केमिस्ट्री के लिए 45 मिनट से ज्यादा कभी मत देना एडवांस में, एंड इट्स नॉट इवन नीडेड. और मैथ्स जनरली आजकल लेंदी आ रहा है, ट्रेंड तो यही हो रहा है, और टफ भी है, सो यू नीड मोर देन 1 hour फॉर मैथ्स. दैट्स द पीपल थिंक दैट मैथ्स लेंदी हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, बिकॉज यू आर गिविंग 1 hour टेक्स्ट 1 hour, सो यू नीड मोर टाइम देन दैट. एंड बट नॉट मोर देन 1 hour 15 minutes, उतना मिलता नहीं. Okay. And bedside के लिए it's all about speed. Fix time for each section. वो तुम्हें अपना पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सा ज़्यादा टफ लगता है सेक्शन. और मैथ्स के लिए तो आई थिंक 1 hour देती थी मैं. एंड केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मिला के आई थिंक आई यूज्ड टू गिव 1 hour, and then the rest half an hour for math and English. So first of all, it is very important to attempt all the bonus questions. Don't leave out on the bonus questions. Coaching वाले कहते होंगे कि it is not needed, or even anyone else. But in my personal opinion, it's very very important. And it's also very important to choose the first slot. Generally, उसमें paper ज़्यादा easy आता है. मतलब trend ये है, it's not fixed, but generally होता है ये. And the difficulty level varied greatly from first slot to last slot. First slot was much easier, so try to choose the first slot. And बाकी तो I don't think उसमें ज़्यादा कुछ extra पढ़ना पड़ेगा. Just whatever you study for JEE is enough for bedside. And fix the time and stick to it. Do the easy questions first, and बाकी जो tough है उसमें eliminate करके तुक्के मार दो. But attempt the bonus question. It's very very important. Right. So your suggestion: attempt the bonus problems and make sure that आपके जो bonus problems है वो आपके wrong नहीं होने चाहिए. The question we have is at the same time कोई sequence follow करना चाहिए कि like आपको पहले physics और maybe chemistry और maths और whatever. What do you suggest? मतलब किस order में हमें रखना चाहिए according to someone's, like according to you or maybe someone else? It does depend on your mentality too, क्योंकि मुझे lengthy या tough section पहले finish करना better लगता था, उससे stress level कम होता था. But generally लोग chemistry, physics, maths करते हैं, तो उसमें problem तो नहीं होता generally, मतलब कर सकते हो वो. But mains के लिए I suggest do maths first. It helps. मतलब normally it comes like कि पहले बोलते हैं कि पहले आप अपना strong area करो. Okay, and finish as soon as possible, and then average, and then your weak area, or maybe I think it depends person to person. Okay, but because before the mains exam normally बच्चों को एक अच्छी खासी test series मिल जाती है, तो बहुत सारे बच्चे test दे पाते हैं. So as a teacher I feel कि बच्चों को वहां पर थोड़े बहुत experiment कर लेने चाहिए, and I think they should come to know that उनका एक जो perfect sequence है where the people like students are getting the maximum marks, I think then they can follow that. Yes, I agree. Right. Or maybe you should have some flexibility also. You know, sometimes when you read the section, कई बार लगता है कि आपका जो strong area है उसमें थोड़े tough questions आ गए, या कोई आपका weak area उसमें आपको लग रहा है कि questions are easy, then obviously you should have that flexibility कि somehow आप थोड़े बहुत changes कर सको. हाँ, yes. Okay. Advanced में I think physics और maths में तो होनी चाहिए flexibility. कभी-कभी physics tough होता है, कभी maths tough होता है. So right. See that section. And I think last few years से कुछ रहा ही है कि normally maths is you know थोड़ा lengthy paper आ रहा है. So लोग होता है, लोगों को लग रहा है कि यार maths is lengthy, then what should be done, like कैसे करें. Okay, so I got your point, and I think जनता जो सुन रही है उन सबको भी idea लग गया है. So Sayali, we have our next question, which is what do you think about online studies
I'm talking about online classes, online studies through different sources. Okay, मतलब ओवरऑल ये है कि बिकॉज आप जो अपनी क्लासेस कर रहे थे इट वाज कंप्लीटली ऑनलाइन, यू आर इन अ डिफरेंट सिटी, आई वाज इन डिफरेंट सिटी, सो मतलब आपको कैसा लगा कि ऑनलाइन क्लासेस अगर आप कर रहे हैं तो कितना आपके लिए फिजिबल है, एंड व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? I think it is very important because you can schedule classes according to your needs, and in online teaching एक तो ये होता है कि तुम्हें अपने needs के according material मिलता है, which is important, and the teacher knows exactly where you're strong and your weak points, so they adjust the material accordingly or the questions accordingly. And speed is also very important. The teaching speed is according to your needs or your capacity, and so yeah, you can connect with better teachers through online mode. Coaching में fix हो जाता है. Sometimes you are too scared to ask questions in your coaching institute. Maybe your teachers are strict or they don't give enough time to solve your doubts, which is not the problem in online coaching. And I think it was the most beneficial thing for me to start online classes. Okay, so मतलब according to you, you say that कि ऑनलाइन में इट बिकम्स वेरी इजी फॉर ए स्टूडेंट कि वो टीचर के साथ यू नो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर सकता है. इवन आई थिंक लाइक टीचर्स के लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज दे कैन शेयर द मैक्सिमम कंटेंट विद देम, जो समहाउ लाइक फिजिकल क्लासेस में कई बार वो नहीं कर पाते. ओके, सो काफी अच्छा कंटेंट शेयर कर सकते हैं, एंड it's very easy, like class finish hote directly you can have that content, you can solve the problems. Yeah. Okay, and you can plan your classes perfect. I think this is really good. If someone is having like, yeah, like even you can get more content on your weak areas, which is the main problem in most coaching institutes, that अगर कोई टॉपिक तुम्हारा वीक है तो तुम फ्रीली पूछ सकते हो कि मुझे इस पे और प्रॉब्लम्स चाहिए, एंड अप्रोच द टीचर फ्रीली कि इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रहा है और ये इसमें कुछ करना पड़ेगा. Okay, perfect, very good. So Sally, let's move to our next question. Here unlimited number of questions हैं जो बच्चों ने पूछे हैं, तो मैं जो भी हैं questions बहुत select करके I am just asking. Very important question. I think हर बच्चे का एक बहुत common question मैंने देखा है. Even जब मैं भी prepare कर रहा तब मेरा भी ये question था, तुम्हारा भी था, तुमने भी ये कई बार पूछा. So the question is, how do you keep yourself motivated? Normally what happens if someone is scoring good, तो कोई problem नहीं आता, you know, everyone is happy, you know, सब चीजें बड़ी smoothly run कर रही हैं. But if suppose in a test or whatever, like you are not getting good scores, और maybe जितना आप चाहते हो आपको उतने scores नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे time पर आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं? तो ये टफ चीज होती है क्योंकि रैंक्स ट्रेंड टू वेरी अ लॉट समटाइम्स. इनिशियली तो होता है, एंड में इट बिकम्स अ लिटिल मोर स्टेबल, बट आई थिंक इनिशियली इवन 10th 11th में फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट ऑन रैंक कि मेरा क्या कितना कंप्लीट हो रहा है, कितनी रैंक आ रही है, बट फोकस ऑन द कंसेप्ट. फोकस तुम्हें कितना एक्चुअली पता है, उसमें से कितना आता है. तुम शायद थोड़ा डिफरेंट कर रहे हो लोगों से, बट यू शुड focus on that, and also your mistakes. एक बार देख लो कि exactly कहाँ पे गलती हो रही है. Is it time management or is it concept? And then work on it accordingly. But keep working hard. ऐसे नहीं कि rank कम आ गई तो अब बस I'm depressed and I will stop working. Don't do that. It's tough, but just devote that much time and keep on working. That is very important, and that will pay off in the end. हो जाएगा. Okay. So overall, you want to say that don't give up very easily. Exactly. You know, whatever score you are getting, maybe it is good or bad or whatever. But what is more important, I think, जो आपने ड्रीम किया है, आपको उस ड्रीम के बारे में सोचना चाहिए. And just वो एक thought है जो आपको I think push कर सकता है. So yes, as Sayari said, please remember, don't give up
easily. This is very, very important. Okay. Hmm. Sally, because at this point of time, when you are, आप बच्चा अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, स्कोर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कितना टाइम, स्टडी आवर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, कितना टाइम बच्चे को देना चाहिए? I think 6 hours तो मिनिमम है, बट मैं डेली नहीं कह सकती बिकॉज द रूटीन वेरीज. अभी ऑफलाइन नहीं है, बट जब होता था तब स्कूल भी होती थी. सो आई थिंक यू शुड सेट वीकली गोल्स. उस हिसाब से कर लो क्योंकि यू कैन कवर अप इन द वीकेंड. या फिर मतलब मंथ का तो आइडिया होना ही चाहिए कि इतने इतने चैप्टर्स होने चाहिए. बट इफ योर डेली रूटीन वेरीज अ लॉट, देन सेट वीकली गोल्स एंड स्टिक टू देम. एंड आई थिंक अगर नहीं है ऐसा कुछ वेरिएशन बहुत, तो 6 to 7 hours minimum. Okay, so you are saying 6 to 7 hours, so I think this sounds good. 5 to 6 or 6 to 7 hours, I think this is more than sufficient from day one onwards. Yeah. राइट. सो सही कहा कि अगर आप वीकली टारगेट करते हैं, इट साउंड्स गुड. और मे बी आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको मंथ में ये चीजें फिनिश करके रखनी है, स्पेशली व्हेन वी आर डूइंग रिवीजन. यस, रिविजन के लिए शेड्यूल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है. और वो मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो, एंड स्टिक टू इट. एक बार देख लो कि क्या क्या करना है, किस किस रेफरेंस बुक से करना है, एंड डोंट रिपीट. मतलब हर चीज को एकदम रिपीट मत करो बिकॉज यू ऑलरेडी नो सम थिंग्स. सो फॉर इफेक्टिव रिविजन बस जिसमें प्रॉब्लम हो रही है एंड में, तो एटलीस्ट जिसमें प्रॉब्लम हो रही है उसी को करो. इनिशियली इफ यू आर डूइंग द फर्स्ट रिविजन, देन रीड एवरीथिंग. बट and problem solving at that stage is very important, more than reading notes, except for chemistry में notes पढ़ना ज़्यादा important है. But focus on tough problems and also problems that are actually मतलब जो type actually exams में आता है. Don't just spend time on abstract questions. Okay, perfect. So we should not spend time on abstract problems, so obviously that clarity has to be there. What type of problems will be there, so you should focus more on those type of questions. Yeah, you'll get that idea from previous year papers. Perfect. So you suggest that हर बच्चे को, जो बच्चा एडवांस के लिए टारगेट कर रहा है, उसको प्रीवियस इयर्स के जितने भी लास्ट 15-20 इयर्स के पेपर्स जो कि अवेलेबल हैं, वो उसको प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करने चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट वही है. एंड इवन मेंस के लिए previous year papers is more important than your coaching material. सबसे important वो है. हर एक पेपर को टाइम बाउंड करो. एंड ज्यादा वेरी नहीं करता पैटर्न. एक बार कर लोगे, आई थिंक इस ईयर तो बहुत ज्यादा स्लॉट्स थे, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एडवांस के भी टाइम बाउंड कर लो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So perfect Sally, perfect. And I think all questions, this ये जो क्वेश्चंस का मेरे पास कलेक्शन है, इट गोज ऑन, चलता जाएगा. बट आई फील जो मेजर क्वेश्चंस हैं, जो आई थिंक हर बच्चा, इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि सर कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ओके, दैट इज परफेक्ट. वो आपका आंसर आया कि यस, एटलीस्ट वी शुड ट्राई 6 to 7 hours. एंड इट डिपेंड्स, बिकॉज स्कूल है एंड ऑल, आपको कोई भी चीज अवॉइड नहीं करनी चाहिए. स्कूल और आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट वी शुड मेक दैट बैलेंस. ओके, सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये फील नहीं हो कि मेरा वहां पे कम स्कोर आ रहा है, यहाँ आ रहा है. सो दैट बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन आई थिंक सारे क्वेश्चंस के हम लोगों ने आंसर्स कर लिए हैं. जो मेजर इश्यूज थे, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, किस ऑर्डर में हमें पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, ओके, एंड कितना टाइम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे देना चाहिए. अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो कब आपको उस प्रॉब्लम को स्किप करके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करना चाहिए. हाँ. And the main problem with solving complex problems is that you're scared of it initially. पहले तो वो fear निकाल दो दिमाग से. That is very very important. That's when you'll actually start thinking. दिमाग बंद मत करो. And so right, and I think you should keep on writing more and more test papers.
बिकॉज Yeah, वही एक पैटर्न है जो आपका डर, जो एग्जाम का डर है वो आपका निकालता है. बिकॉज मैं नॉर्मली देखता हूँ बच्चे कि सर कोई ना कोई एक्सक्यूज रेडी होता है, बट इन योर केस यू यूज टू राइट मोर एंड मोर एंड मोर टेस्ट पेपर्स. मुझे आज भी याद है तुम लोग तुम बोलती रहती कि सर टेस्ट पेपर आप कब अपलोड कर रहे हो, आई नीड टू सॉल्व दैट पेपर एंड ऑल. सो दैट वाज वेरी पॉजिटिव पॉइंट, दैट डोंट गिव अप easily. Yes. ड्रीम किया है, you can easily achieve that dream. In your case, list goes on like achievements hai, IITs hai, BITSAT hai and all. So definitely, I think this is more than enough for all students. सबको अपने questions के answer मिल चुके हैं. And Sayali, thank you very much for joining us on this Toppers Talk, JEE Talk. And I really appreciate कि तुमने time निकाला अपने obviously classes, because तुम लोगों की start हो चुकी हैं, assignments and all आने start हो गए होंगे. Yeah. It's not a problem at all. My pleasure. Thank you. Okay, so thanks a lot, Sayali, for joining us and giving us your precious time. Thank you very much. Thank you. Yeah. God bless you, beta. Thank you, sir.